Hello students, welcome to your pre-education. I am Jitendra Tyagi and I am here to share one important information that is from SIDBI, okay, that is regarding some recruitment. So let us see what is this. Small Industries Development Bank of India, SIDBI. It was established under Parliament Act by Government of India. So they are going to recruit for the post of assistant manager in grade A, okay, recruitment of officers in grade A, journal stream 2022, and this is the advertisement number. This PDF you can also find on the website of this organization in the career section. So you have to apply on the website of this www.sidbi.in, okay, after carefully going through the entire recruitment brochure. So opening of online registration or payment of fee will start from 14th of December, okay, 14 December से start हो जाएगा, you can apply, and closing date, last date is 3rd of January 2023, okay, न्यू ईयर के बिगिनिंग में 3 जनवरी को आपको लास्ट डेट है अप्लाई करने का. Then cut off date for determining eligibility criteria with regard to age, okay, so age will be determined on the basis of this date, 14th of December, right. Now educational qualification will be decided on the basis of 3rd of January, and tentative date of online examination is in January or February, okay, they have not announced the exact date, but it may be in January month or in February, okay, so very soon it is going to happen, and tentative schedule of interview in Feb, ठीक है, तो बहुत ही जल्दी पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होके एंड हो जाएगा, ओके, सो दोज लुकिंग फॉर दिस गुड जॉब दे कैन अप्लाई. Now let us see what are other important details for you. So here you can see number of vacancies. So in unreserved category we have 41 vacancies out of total 100, and EWS 10, OBC 28, ST 9, SC 12. So in each category we have good number of vacancies, and the pay scale is approximately 70,000, and it may revise, okay, it may increase also. Now what is other important point? You can when you will read this PDF, so then you can get the idea about what type of work you are supposed to do after joining this organization, okay. In the job profile section they have written these details, you can read this later. Now so what is the important thing here which I am going to discuss? Eligibility criteria, okay, so nationality or citizenship you can read this. Then age limit as on 14th of December is 28 years is the maximum age limit, and minimum age limit is 21 years, okay, so 21 से 28 की एज में you can apply. Now according to different categories जो age relaxation मिलता है that you can get, okay, according to your category. Now main thing is essential educational qualification, okay, so post is assistant manager grade A, general stream, okay, then this is the educational qualification column. So post graduation degree in any discipline preferably from commerce or economics. देखो किसी भी आपके पास कोई भी डिग्री है, ठीक है, M.Com है, MSc है, M.Tech है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, ऑल आर एलिजिबल, बट प्रेफरेंस किसको रहेगा इंटरव्यू के टाइम पे अगर हम बात करें, ठीक है, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में अगर है या मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में तो थोड़ा एज मिलेगा, ओके. अप्लाई तो बाकी भी कर सकते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन में, ऑल कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू दिस, बट दे विल गिव प्रेफरेंस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज. मींस इफ इन द रिटन एग्जाम two candidates are getting same marks, okay, then at the time of interview these will be in edge, right. Now if you don't have this, then another criteria is this one: bachelor's degree in law, bachelor's degree in engineering, and in engineering, any engineering, all branches are eligible, but preference will be given to civil, electrical, mechanical, okay, so these branches are desirable, right. Computer science, instrumentation, electronics, all can apply, okay, but at the interview these will be preferred, okay, if they have the same marks. Now third one is CA, CS, CWA, CFA, all these degrees, or PhD from institutions
recognized by Government of India. So PhD candidate can also apply for this job. So this is the eligibility criteria. Now percentage criteria is 60%. Okay, CGPA to percentage conversion, all these things are mentioned here. Now what is the selection procedure? So this is important thing, you can see here, objective test as well as descriptive test followed by personal interview. So test bhi hoga, interview bhi hoga, both things will happen. Okay, now this is the syllabus. Okay, name of the test is English language test. Objective type 5 options will be there. Okay, in each case. So 30 questions 20 minutes में आपको करने हैं इंग्लिश के. Okay, then general awareness with special reference to banking and financial sector and economic and social issues. तो जनरल अवेयरनेस में ये सेक्टर मेन इंपोर्टेंट रहेगा. 50 क्वेश्चंस ओके 30 मिनट में आपको करने होंगे. रीजनिंग एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स मतलब 1.5 मार्क्स ईच 40 मिनट में आपको करने होंगे. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 30 मिनट में आपको करने होंगे. सो ये टोटल बनता है आपका 160 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 120 मिनट. देन ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट. कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर पे स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए. टाइपिंग के लिए आपको ये टाइप करना है क्या, कंप्राइजिंग ऑफ 2 एसेज ऑन फाइनेंशियल बैंकिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इन इंडिया 20 मार्क्स ईच. तो 2 ऐसे आपको लिखने होंगे एंड 1 बिजनेस लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का. ठीक है, तो टोटल 50 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं. ओके, तो टोटल 250 मार्क्स का पूरा ये रिटन प्रोसेस है और 180 मिनट्स में 3 आवर्स का ये पूरा इंटरवल रहेगा. ओके, एंड देन पर्सनल इंटरव्यू विल बी सेपरेटली कंडक्टेड और उसी के बेसिस पे फिर फाइनली आपका सिलेक्शन होगा. ऑनलाइन एग्जाम होगा और बाकी आप अप्लाई करोगे तो उससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आगे मिल जाएगी. ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स अभी जॉब सर्च कर रहे हैं और जिनको लगता है सुटेबल जॉब, दे मस्ट अप्लाई फॉर दिस जॉब. ओके, ऑल द बेस्ट.